In this video, we understand the concept of this derivative, which is very important derivative, cot square 2x. Its derivative, cot square, which is can be also write as derivative of cot 2x whole square. These both are equal. This also can be written. So now we take it derivative. How we take it derivative? Firstly, we applying power rule. वो सबसे पहले हमारे पास power है. Firstly, apply power rule. Then derivative of cot 2x. Second and third, its angle 3. 3 times we apply here derivative. Firstly, we apply now. Let's see. Power rule 2 cot angle 2x. यहाँ पे जो एंगल है वही हम यहाँ पे लिखेंगे. ये कभी मिस्टेक नहीं करनी है आपने. ओके, पावर रूल. सो पावर में से 1 माइनस. नाउ अप्लाई द डेरिवेटिव ऑन cot 2x. This is a common mistake when you apply power rule and then take the derivative of 2x, or only you apply power rule and stop. Not. So ये मिस्टेक कभी नहीं करनी. आपने फर्स्टली पावर रूल, देन cot 2x, देन इसके एंगल तक आपने जाना है. जैसे एक ऑनियन होता है, हम उसको बारी बारी उसका छिलका उतारते हैं, सेम इसी तरीके से यहाँ पे है. ओके, 2 cot 2x power 1, do not write here. Derivative of cot 2x is same like we know that derivative of cot x. Derivative of cot x is equal to minus cosecant square x. Here is the derivative of cot x is equal to minus cosecant square, but we have 2x. Here is 2x, so here is the angle 2x. Never do this mistake कि आप यहाँ पे x ही लिख दें. जो हमारे पास एंगल है आपने उसी को कंसीडर करना है, जो कि आ जाएगा माइनस cosecant square 2x and derivative of internal function which is 2x. Put brackets always. And here we can put bracket and never mix up, because 2x can never be multiplied with this. Okay, 2 cot 2x, 2 minus cosecant square 2x. Derivative of 2x is with respect to x, so this becomes 2. 2 out of and x derivative with respect to x, 1 is 2. And always put bracket, because 2x can never be multiplied with 2. This is the very common part and very common mistake which students multiply 2 with this 2 and write 4x, which is totally wrong. 4x can never be here. So कभी भी 2 को 2x के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना. तो आप इसको क्या करना है, इस पे ये ब्रैकेट क्लोज भी है, इसको आप बाहर ले आए. बिल्कुल इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो सकता है. 2 2 = 4. बी केयरफुल अबाउट दिस मल्टीप्लीकेशंस, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. एंड cot 2x एंड दिस माइनस इज आल्सो आउट. माइनस को भी हम साथ ही बाहर ले आते हैं, बिकॉज माइनस भी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में कहीं भी नहीं हो सकता, बिल्कुल वो बाहर आ जाएगा. एंगल्स के साथ बहुत केयरफुल रहें. ओके, ये 2 हम बाहर लेके जा चुके हैं. दिस इज द सिंप्लीफिकेशन last, and this is the derivative of cot square 2x. Very important function and very careful about this one.